India is a country where Sufism has not just flourished but has also become a way of integrating different religious communities. Even today, the teachings of these saints inform the lives of people, and this was very well reflected during the special prayers at the shrine of Saint HazratQutbuddinShahRisaldar, where people of all faiths assemble to seek the blessings of the holy saint. Situated in the Ranchi city of Jharkhand, the shrine of HazratQutbuddinShahRisaldar has been serving as a cynosure of religious harmony for generations. Regarded as one of the greatest Sufi saints, Hazrat Qutbuddin Shah throughout his life spread the message of Sufism and peace. Recently, the 215th death anniversary or Urs of the Sufi saint was celebrated at the shrine, which was attended by people of all religious communities. सभी धर्म के लोग आते हैं, यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कोई आते हैं मन्नत लेके। सभी धर्मों का मन्नत यहाँ पर पूरा होता है। हम लोग करीब 90 साल से दुकान है, ये मेरे नाना का है और कमेटी और हम लोग के बीच बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है। यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है। यहाँ बाबा का दरबार 24 घंटा खुला रहता है, कभी भी आइए जाइए। जायरीन के लिए यहाँ जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सब कोई खड़ा रहते हैं उसकी खिदमत के लिए। Coming from far and wide, people of all religious communities attended the special prayers to seek the blessings of the saint. It is believed that the saint fulfills the wishes of all and nobody returns empty-handed from here. हम यहाँ 15 साल से आ रहे हैं, 15-16 साल से, और हम आते ही रहते हैं, है ना। मतलब जब मन करता है तो आ जाते हैं, ऐसे में बराबर नहीं आते, मगर जब मेरा मन करता है तो आ जाते हैं। क्या सोच के आते हैं? बस जो भी सोचते हैं मनकामना पूरा हो जाता है। जो भी सोचते हैं मनकामना पूरा होता है और आशा मेरा पूरा यहाँ से रहता है। नहीं, कोई फर्क नहीं। हम अच्छा लगता है यहाँ तो आते हैं तो बहुत शांति महसूस भी होता है, बहुत अच्छा लगता है। आते हैं तो कुछ पल के लिए अच्छा लगता है। Since ages, the Sufi saints like Hazrat Qutbuddin Shah have propagated the message of spiritualism and harmony in our country, and their teachings are still playing a significant role in strengthening the thread of secularism.